we can Thanks, but make your day better and better. For example, I also used to write stories for Savita Bhabi. A dream job. So imagine a Dalit wrote sexual porn that most of the country read. Oh yeah, true. Wow. So make that connection. अनटचेबल ने लिखा और उन्होंने कहाँ कहाँ टच किया अपने आप को. भगवान. wow. हेलो दोस्तों, मैं हूं सादा और आज एग्जैक्टली एक साल बाद हम आपके लिए लाए हैं बकरमैक्स बातचीत का नया एपिसोड. कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन की दाद तो देनी पड़ेगी. सो आज के एपिसोड हम बात करेंगे दलित कार्ड एंड दलित हिस्ट्री मंथ के बारे में विद शिखांत सबलानिया, ख्याति पाठक, सुमित कुमार एंड मनाल पाटिल. रिकॉर्डिंग हमने इसकी अप्रैल में की थी ड्यूरिंग दलित हिस्ट्री मंथ एंड 1.5 महीने के एडिटिंग लिम्बो के बाद वी आर फाइनली रिलीजिंग इट टुडे. सो लेट्स बिगिन. हेलो गाइस, वेलकम टू बकरमैक्स बातचीत. आज हम हैं यहाँ टू सेलिब्रेट Hello. दलित हिस्ट्री मंथ. थोड़ा सा हिस्ट्री अबाउट दलित हिस्ट्री मंथ. Inspired by Black History Month, which is celebrated in October, a group of Dalit women first launched the Dalit History Month project in April 2015, where people discussed and highlighted the absence of Dalits in Indian history and mainstream media. आज हम वही करेंगे. We'll be discussing this history, but in addition to the past, we'll also touch upon the contemporary Dalit experience, for which today we have Shikhant Sablania, who's a Hello. cartoonist, designer, founder of an animation and design studio called Churma. He's also the creator of African Caravan, a comic series he created after 1 year of traveling through Africa. Manaal Patil is a writer, blogger, and a stand-up comic who calls himself an Ambedkarite comic. Khyati Pathak is a writer, cartoonist, and a longtime friend and collaborator of Bakarmax, where she's been credited for more than 20 comics over the past few years. She's also the co-host of Pulyabazi. So let's start the conversation. Any opening comments, or do I start off with a question, like brain teaser type? क्या करना है बता दो. No, first of all, hello to all the people who are listening and not watching, so that they know that we have started this. And also, did you introduce Sumit? Sumit, क्या करता है Sumit? हमें पता है अच्छा, okay, sorry. Useless person in the podcast is Sumit Kumar. And last but not the least, Bakarmax के बाप, founder CEO Sumit Kumar. Yay! So how do you like navigate? It's a question to all of you because all of you handle humor and art. How do you like navigate this thin line between what is acceptable as humor, and because we're talking about this heavy concept of caste, but you're making a joke about it. So how do you navigate that line? Wow, this is the conversation started. Would anyone सोच रहे हैं सब लोग. Thinking mode on. नहीं, okay, I'll go for it. First is I think जो बंदा जिस community से होता है ना, I personally think they have the license. So they can generally, actually everybody should be ठीक है, can joke about things. There should be no holy cow. But generally, like a rule, for example, we follow in Bakarmax writing is to not to punch down, usually to punch up. तो एंड ऑब्वियसली बट आई पर्सनली फील जिसके पास जो जिस कम्युनिटी से उस कम्युनिटी का तो उसको खुलकर मजाक या कुछ भी कॉमेडी करने का राइट है. एंड ऑन अ लार्जर लेवल एज अ पर्सन हु लव्स कॉमेडी, हु प्रैक्टिसेस कॉमेडी, आई थिंक हर चीज का मजाक उड़ाना अलाउड होना चाहिए. सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव. लाइक आई डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट actually saying most things, but especially when it comes to caste jokes वगैरह also I don't worry too much. I go for it. I believe you'll get to know when the beer attacks you is only by poking the beer.
नहीं, मैं आई एग्री विथ व्हाट सुमित सेइंग, बट मैं थोड़ा उसको इस तरह सोचती हूँ, मैं जिस चीज को समझ सकती हूँ तो मुझे लगता है मैं जिस चीज को समझती हूँ तो क्योंकि मैं उसको समझती हूँ तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ। अगर मैं जिस चीज को नहीं पूरा समझ सकती हूँ तो फिर मैं उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे वो पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जहाँ मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे पता है कि सच्चाई कहाँ पे है, तो और क्या तो मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है, तो वहाँ मुझे कम डर लगता है कि क्योंकि मुझे पता है कि ये रियलिटी है। तो वहाँ पे जोक बनाना या उसका कुछ वो एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, मतलब जोक हम तभी बना सकते हैं ना जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो। हम आधे अधूरे पॉइंट ऑफ व्यू में फिर वो जोक गलत पड़ सकता है, इसलिए उस केस में जो नहीं समझ में आता है उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं बनाऊं, या जो मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है उस पे मैं नहीं कोशिश करूं, मतलब उस पे मैं बात नहीं करूं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मुझे पता है कि ये सही है, उसके लिए मैं मुझे इतना टेंशन नहीं लगता है कि मैं इस पे जो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो सच्चाई है। I'll tell you how I navigate through this, right? Also, ये हम हिंदी पॉडकास्ट है कि इंग्लिश पॉडकास्ट है कि anything? एवरीथिंग ये है। सब कुछ। ठीक है तो यार ये क्या है, दैट वाज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बुलशिट। बोलना चाहिए था उर्दू पॉडकास्ट, कुछ तो कोई और रैंडम उर्दू बंगाली पॉडकास्ट है, उर्दू पॉडकास्ट। उर्दू पॉडकास्ट। when you said na like acceptability in humor and all that stuff, so I feel like the humor comes out when it's not acceptable. Like of course when there is a thing of acceptable humor also, but the comics that I personally like the most are the ones who push that boundary, who say the most fucked up things, but it's still fun. They will express the most. So I personally believe कि punching down भी मतलब अगर वो funny है तो funny है, and I think it depends on intent. It depends on intent. Like there are so many comics who say so many fucked up things, but their intent is not to like हाँ put somebody else, like even if they are हाँ in their joke putting the person down, the intent is to make the people laugh on something about it. So that's how I navigate it, is to like to make sure that my intent is correct when I'm making of a very fucked up joke. Like even with the intercaste orgy joke, right? I know it's a little can get uncomfortable, but then I follow it up with things which hopefully make them laugh, and they do. So that's what that's the so even I think Sumit, when we got in touch, right, when my thing sort of blew up on Twitter, that 1 minute 30-second thing, it started off with a lot of reservation bashing material, right? कि तुम्हारे पास हाँ तुम्हारे पास स्किल नहीं है, वो नहीं है, तुम्हें बस दलित कार्ड है तो तुम्हें ये सब चीजें मिल रही है, जैसे जो भी whatever those things are. And then I used to keep doing that for a number of years, right? For 2-3 years, it was just punching down material that I had. But then one day I was like, oh, like कि मेरे को like my dad tells me मेरे को reservation तेरे को reservation मिला, अंग्रेजी मत झाड़ गांडू, तेरे को reservation मिला, तेरे को आती है क्योंकि मेरे को reservation मिला है, ऐसा कुछ तो भी था. So basically so that made it okay for me to put it online, like when I said a bunch of reservation punching down jokes, but then I turned it upside down with my dad telling me कि you are able to speak in English because I got reservation, so don't fucking say shit to me about it. So that's the approach I'm trying to put in all my stuff, because I have a bunch of cast material which when I started writing it and performing it, it was all punching down. It was all self-deprecating and all punching down on myself, but also punching down on everybody else. What's this? This is you saying, dad मुझे कोटा नहीं चाहिए, and then your dad saying के इंग्लिश मत झाड़ चूतिए, तुझे आती है क्योंकि मैंने रिजर्वेशन लिया. हाँ So हाँ I've हाँ 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 I've वही just put it in my वही. comic. तो वो लाइन मेरे को 2-3 साल के बाद आई, आफ्टर आई मेड 10 minute bit of punching down Dalit material, that I Yeah, was like, yeah.
I don't want to put out a material which will I'm still building it. I'm still in the process of making every joke like somehow work with good intent. So like that's how I navigate through to answer your question. Interesting. I think I agree with what Manaal is saying in terms of the intent really matters here, because oftentimes जैसे ख्याति was saying कि जिस बारे में हमको पता नहीं है उस बारे में जो करना या कोई करना बहुत मुश्किल होता है, right? But at the same time, we as humans are also evolving as we are growing, right? Like with time, with our age and all. तो हर बार ऐसा नहीं हो कि मतलब आपने 10 साल पहले कोई चीज बोली है, वो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी और आपने बिल्कुल अपना थरो रिसर्च करके समझ के बोला होगा, राइट? बट उसका इंटेंट सही हो सकता है, मतलब इवन इफ योर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, लेट्स से फॉर अबाउट समथिंग, है ना? तो वो एक मतलब वो एक बैलेंस वाली चीज भी कहीं पे होती है कि नोइंग प्लस इंटेंट प्लस पंचिंग up वैसा वाला चीज का एक balance, I think, is something that we all try to strive for when we are creating something in public domain. वो एक चीज है. Also इसके साथ साथ एक और चीज ये भी कि जैसे मनोज सिंह की सेल्फ डेप्रिसिएटिंग ह्यूमर या दलित्स के ऊपर जोक करने वाला जो पूरा एंगल है, वो आई थिंक वो होना भी चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स हम उस स्पेस में हैं जहाँ पे definitely there are certain things that we have to be little aware of and cautious about, but at the same time it should be allowed to make jokes about our own community as well, because oftentimes मैंने ये observe किया है, especially in online spaces, कि एक दलित दूसरे दलित पे भी जोक मार रहा है तो तीसरा दलित उसको रोक रहा है, मतलब which is also not fair, because ठीक है ना यार, क्या हो गया, हम में कमियां एक हो सकती है सेकंड, कि हम थोड़े शिखांत, दूध के धुले हैं. टोटल कितने दलित? 3 3 ही है बस. वो आपस में लगे हुए ट्विटर पे. so anyway, you know what I mean, right? Like, I mean, I don't know if I'm making sense anymore, but yeah, some like मेरे को थोड़ा सा वो लगता भी है कि ना वो होना चाहिए अलाउड ना, मतलब क्या नहीं, जैसे you were अपना actually last time you were saying this thing ना, where कि बेसिकली बहुत सारी वो दलित लोग हैं ना जो दे आर राइटिंग खुद की, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दलित है, और कि दलित यूनिटी, अंबेडकर, उस सब पे काम करने के बजाय दे स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर फेक हिस्ट्रीज, वो पुराने कि हम इस राजा के घोड़े से निकले थे और फिर ये हुआ था, वो हुआ था. Ambedkar is some surname given by a Brahmin teacher and all that stuff. Not even that, like उससे भी regressive कि basically they are writing histories खुद से ही सोच के कि ये एक भगवान थे, हम उसके descendant है, those kind of things, like to still find space in the religion वैसा. or some historical context which justifies them not being Dalit or not faced, like कि मतलब हमने तो ऑपरेशन झेला ही नहीं है ना, मतलब क्योंकि वो एक्सेप्ट करने में पेन है ना, वैसा वाला. है ना? कौन एवरीडे बेसिस पे याद करना चाहता है ना सुबह उठ के, मतलब. So now that we're talking about कि ये change कर सकते हैं, everybody evolves. So this brings me to you are editing your comic right now, Gora Dalit, and Sumit is also editing Dalit Lalit. So दोनों का angle, like, would you like to talk about it? Please talk about it. Yeah, give me some context on this. I don't know what you are talking about. Gora Dalit was written by Shikhant. He'll tell you about it, and he's editing it for this month, ताकि we can repost this. Would you like to please talk about it? Okay, yeah, go ahead. हाँ, नो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि वो एक बहुत क्रूड गंदा जोक था, जो पार्टी जोक्स नहीं होते, जैसा अमन जब यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स वाला जोक है. तो अब मेरी शक्ल सूरत तो देखो है नहीं, है ना, टिपिकल दलित वाली, राइट? मैं सड़कों पे चलता हूँ, मैं करोल बाग में रहता हूँ. करोल बाग इज हॉटस्पॉट फॉर
फॉरेनर्स, है ना। मैं सड़क पे चल के जाता हूँ तो कोई मेरे को इजरायली समझता है, कोई मेरे को समझता है कि भाई ये जर्मन है या कुछ। तो मतलब मैं मतलब माय रेंज इज फ्रॉम कश्मीर टू टर्की, मतलब वो रेंज है मेरा, ठीक है। तो हाँ मतलब तो ना बहुत ऐसा ऐसा somehow ऐसा बन जाता है कि whenever you go to or you're generally talking to somebody and like कि ये conversation आता है, then मतलब हमें शर्म नहीं है वो वाली एक्सेप्ट करने की। तो लाइक हाँ ठीक है मैं हूँ दलित। तो लाइक जैसा पिछले पॉडकास्ट का कॉल बैक रेफरेंस कि मैं कॉलेज में था तो आई वाज इन दिस गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। तो वहाँ पे क्या कास्ट का वो मिलता है ना, कंप्यूटर मिलते हैं या कुछ बुक्स मिलती हैं, है ना, SC ST स्टूडेंट्स वगैरह को। तो मैं जा रहा था लेने, तो मेरा रूममेट मेरे से पूछता तू क्यों जा रहा है, तो मैंने बोला भाई मैं दलित हूँ। तो उसका रिस्पॉन्स था चल बे। So that's the response कि मतलब because there's a stereotype image of Dalit person कि मतलब वो ऐसा मतलब डार्क होना चाहिए, कपड़े फटे होने चाहिए, या बिल्कुल ट्राइबल होगा या गंदा होगा, like whatever, there's some certain amount of stereotype। Yeah, तो dude. उसको लेकर हम्म, हाँ, तो और ये सब बहुत सारी बार हो रखा था लाइफ पे। तो उसके बाद ना मतलब अ, जब भी कोई ऐसा पार्टी वार्टी में कुछ बात बात कर रहा है, जनरली कुछ नॉनसेंस चल रही है, तो पीपल आर लाइक तू इतना गोरा कैसे है, तू तो दलित है। तो आई वुड मेक अप दिस रैंडम स्टोरी कि मतलब हाँ हम लोग ना सब काले हुआ करते थे एक जमाने में, फिर मेरी पर कोई दादी होगी, वो अंग्रेजों के घर काम करती थी, और उसके बाद से सब गोरे हैं फैमिली में, वरना थोड़ी हम गोरे हो सकते थे। तो तुम्हारे ऐसा घर करके वालों को कुछ था। तुमने ये कॉमिक पढ़वाई है क्या? मतलब तुमको घर में किसी ने तो मारा मारा कैसे हाँ नहीं? हाँ, अरे मेरे मेरे घर वाले खुद ऐसे जोक मारते हैं भाई, मतलब अच्छा, कि तू तो तो कहीं फिर से ठीक आया होगा, है। ये वो पता नहीं क्या हाँ, क्या उल्टा पुल्टा। अच्छा, तो ओके। मेरे so me and Shikhant actually are related, and whenever my father sees him, my father like is only line my father says is, बेटा जॉन स्मिथ, मैं तुझको रशिया रशिया भेजकर तेरे से दारू की स्मगलिंग करवाऊंगा। हाँ, हाँ, सो व्हेनेवर and आई he's मीट, been, हाँ हाँ, one joke, and it's हाँ, not even a सेम joke, जोक, ऐसे 10 साल same हो गए, thing। एंड हाँ, सेम थिंग, सेम स्टेटमेंट, एंड हर बार ही वुड कम अप विद सम न्यू फिरंगी नेम ना, मतलब ऐसे न्यू ब्रिटिश नेम कि जॉन पीटर्स, ओरिएंट लॉन्गमैन, but whatever let's he get is back now। to your comic actually। एनीवे या सो वैसा था। तो अब वो कॉमिक, यस, वो लुकिंग बैक, इट इज नॉट लाइक ख्याति से कि वो पिटने वाले काम तो किए हैं मैंने उसमें, तो वो सही नहीं है if you look at it from the feminist lens, or if you look at it from that perspective, right? But at the same time, adding to what I was saying earlier कि भाई क्या बोलते हैं, वो एक मोमेंटरीली स्टेटमेंट को कॉमिक में कन्वर्ट किया गया था, तो शायद उस वक्त मैंने नहीं सोचा वो एंगल, राइट। अब क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में है, एंड आई हैव evolved as an creative person, as also I've understood bit more, थोड़ा nuance। तो आई एम sort of thinking कि उसको कैसे एक नया एंगल के थ्रू सेम बात को कैसे बोला जा सकता है विदाउट या मतलब वो एक अप्रोच ढूंढने की तलाश है उसमें एडिट के अंदर कि, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली में है प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज हुई एक है हुई भी वो थी लोगों के स्टीरियोटाइप साथ। अटैच्ड, है ना, नहीं नहीं, वो और होती है। जो तुमने जो इंसिडेंट बताया है ना, उस प्रकार की चीजें मतलब बहुत लोगों के साथ हुई भी थी इन रियलिटी ऑल्सो। हाँ हाँ, हम्म मतलब तो ये कोई मतलब तुमने अपने फैमिली के लिए मेडअप बनाया है, बट हम्म काफी लोगों के लिए वो हुआ होगा। no no, that was that is a thing, मतलब वो आई नो, या violence, हाँ, इट इज वेरी वेल। मतलब do you know why my grandmother runs faster than the horse, used to run faster than the horse, Why? because जो धीरे भागती थी उनको तो ठाकुर ले गए ना सारे। हाँ, तो वही मतलब इवन दो ये क्रूड लगेगा सुनने में, बट ये सच्चाई भी है ना, मतलब वो ऐसा हाँ नहीं है कि मैं कोई ऐसी एलियन चीज बोल रहा हूँ जो हाँ। जिसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते, विच वाज एक्चुअली ट्रू, राइट। मतलब सेक्सुअल वायलेंस ऑन दलित वुमेन इज, मतलब वी नो हाउ इट इज ना, मतलब यस। दुनिया में। तो वो उसको देखने की बजाय या उसके ऊपर अपने को वो करना है ना, क्या बोलते हैं,
that is something that has to be commented upon, and that is also something that has to be brought in the humor in the comic, right? तो वो वाली चीज है, yeah. एक्चुअली उस पे बहुत पहले कोई इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें 1927 का डेटा दिया था ऑन एजुकेशन डिवाइडेड बाय जेंडर एंड कास्ट, एंड इट वाज बेसिकली अपर क्लास ब्राह्मण मेन, कुछ नंबर्स थे, सो दिस इज 1920s, कुछ नंबर्स थे, लाइक बहुत कम, एंड देन देयर वर दलित मेन, सो अपर कास्ट विमेन थोड़ा और कम, and Dalit men come, and Dalit women was the shit sandwich. 0, 0, 0, 0, 0. Yeah. मेरे कॉमिक का जो कॉमिक है उसका नाम था दलित ललित। तो वो बेसिकली मैंने कॉमिक बनाई थी कि एक कॉलेज के एडमिशन की रो में दो लोग खड़े हैं, दलित ललित और जनरल गौरव, राइट, और वो बात कर रहे हैं आपस में अबाउट कास्ट वगैरह। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरा खुद का जो कास्ट पर्सपेक्टिव है वो बहुत डेवलप हुआ है ओवर दैट कॉमिक आई मेड अराउंड 10 years back, so 10 easily 8 years back, and at that time like, and that's the bad part about जब ये स्कूल में रिजर्वेशन देते हैं, ये किसी भी साइड को पढ़ाते नहीं है कि क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है, दैट्स व्हाई Exactly. हाँ, and exactly that's why the joke which Manal you make is perfect, क्योंकि वो पता है हम सबके साथ हुआ है, हम सबने घर जाके अपने फादर्स को बोला है कि हमें नहीं लेना रिजर्वेशन, मतलब हम अर्बन सेटिंग में बड़े हुए हैं और हमें नहीं लेना, अपने फ्रेंड से डिफरेंट नहीं जाना हमें, और हम सबके पेरेंट्स ने हमें ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। आई नो इट हैपेंड विद मी, आई नो इट हैपेंड विद शिखांत, एक्चुअली वी हैव अ कजन ऑल्सो, एंड आई नो उसके साथ भी था, इट हैपेंस विद एवरी चाइल्ड इन दैट एज, राइट, बिकॉज वो पढ़ाते नहीं है, तो हमको अपनी साइड का समझ नहीं आता कि क्यों मिल रहा है, और जो जनरल साइड का बच्चा है जिसके साथ ये एकदम से हुआ है, उनका बहुत बार इट टर्न्स इनटू रिजेंटमेंट, कंफ्यूजन, रिजेंटमेंट, लैक ऑफ नॉलेज। तो मेरे साथ भी ये था, तो मेरा वो धीरे 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 करके गया। तो जिस टाइम पे वो कॉमिक मैंने बनाई थी, मेरा बिलीफ उस टाइम पर था कि रिजर्वेशन आप अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से दोगे सो दैट्स फाइन बाय मी उस टाइम पर, एंड आई मेड दैट कॉमिक। उस टाइम पर आई यूज्ड टू बिलीव, Same. या Sorry to उस interrupt you, same. Yeah. हाँ, उस टाइम पे आई यूज्ड टू बिलीव दैट क्रीमी लेयर इज अ रियल थिंग, and Yeah. that again मतलब it took me time to understand के नहीं, so basically what I'm doing this month is taking Dalit History Month as a very good occasion to sit and rework that comic from scratch, to include all these points. To it will become a very boring comic which I think two people will read, but I am doing it more as a you can call it, I don't know, prayer, पूजा, उस तरीके से I'm More just than doing two it. people will read. Please don't say that. तुम्हारे बहुत फैंस हैं, ओके, बहुत सब हाँ, जगह पे, सो बहुत ज्यादा लोग पढ़ेंगे ऐसे कुछ। I was doing fake modesty. If you are हाँ, successful, you have to do एग्जैक्टली सूट नहीं करता है Yeah. तुम। हाँ, Khyati also wrote a comic called हम तो कास्ट देखते नहीं है। So मेरा अच्छा, I do not have a Dalit point of view, right? But so this was from a general caste. I But mean, you have a woman card, so huh? Sorry. go on. you Go on. you have you. He's saying, but you have the woman card. ठीक है, हाँ, वो हाँ, उसके लिए बहुत कॉमिक्स और भी बनाई है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। हाँ, वो उसके मैंने ऑलरेडी फेमिनिज्म पे बहुत पॉडकास्ट, वैसे फुलजाबाजी में एक बहुत अच्छा किया था, जिसमें मैंने फेमिनिज्म के दूसरे बहुत सारे वे, उसकी हिस्ट्री और इंडिया में पैरेलल क्या बनता था, वो सब का मैंने कहानी बताया था। तो वो उस पर तो मैं शुरू हो जाऊंगी तो स्टॉप नहीं करूंगी, बट तो ये वाली जो मेरा कॉमिक था उसका नाम था हम तो कास्ट देखते नहीं। एक्चुअली उसका ट्रिगर पॉइंट ये था, ओके, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये कि एज अ जनरल कास्ट, आई मीन एज एन, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड अपर कास्ट बिकॉज इट सेज लाइक देयर इज सम अपर एंड सम लोअर, सो आई, बट फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर अदर ऑप्शन आई एम जस्ट सेइंग इट। तो एज एन अपर कास्ट पर्सन मुझे ये बहुत चीजें मेरे आसपास दिखती रहती थी कि हम
कितना मतलब लोग अभी भी वो कास्ट सिस्टम की हायरार्की को कितना मानते हैं, कितना देखते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं. बट इट इज ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे अपर कास्ट बच्चे या लोग ऑलमोस्ट लाइक वो उनको दिखता नहीं है, उनको लगता है कि हम तो कास्ट देखते ही नहीं, अब ये तो पास्ट की चीजें हो गई है. ऐसा लोग अपने दिमाग में शायद जेन्युइनली ऐसा मानते हैं, या कुछ लोग शायद उसको जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है. बट एक ऐसा लेयर बना के रखा है हिपोक्रेसी का कि हम तो कास्ट नहीं देखते हैं. बट मुझे तो समझ में आ रहा था कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग कास्ट देख रहे थे. तो क्योंकि मैं एक छोटे टाउन से भी आती हूँ, तो वहां पे तो बहुत ओपनली मतलब लोग ऐसे पूछ लेने में बिल्कुल, अभी भी मैं कुछ दिनों पहले गई थी तो मुझे किसी ने ऐसे जनरली पूछा था तुम्हारा कास्ट क्या है, तो वहां पे ऐसे इंट्रोडक्शन का पार्ट ही होता है कास्ट पूछना ऐसे. तो उसमें जैसे कि कुछ कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे कि काफी बार आप अगर रेंट के लिए घर ढूंढ रहे हो तो आपको वो लैंडलॉर्ड पूछेगा. और काफी बार अगर अब जैसे काफी बार मैं ऐसे अंडरस्टैंड जवाब भी देती हूँ, पर अभी लैंडलॉर्ड पूछ रहा है तो चलो सीधा सीधा व्हाई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम करके यू गिव सम आंसर. एंड देन व्हेन दे नो दैट यू आर फ्रॉम अपर कास्ट, दे समटाइम्स शो लाइक some kind of an approval on their face, right, which I feel is totally undeserving. Like क्या है मतलब, क्या फर्क पड़ रहा है मेरी कास्ट ये है या वो है, right? मुझे लगता है कि तो जो वो अप्रूवल मुझे दिखा रहा है, मतलब I do not know a Dalit person's experience because I have not faced it, but I can see that if there is an approval for this answer, there will probably a disapproval from another answer, right? तो I could see that they are trying to gauge that. तो मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या है, मतलब why they are asking. And still a lot of people would say कि नहीं. फिर और एक पॉइंट ये था कि हम बहुत सारे हमारे लैंग्वेज में भी हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं जो जिसको मतलब जो बैड वर्ड्स की तरह यूज होते हैं, पर वो एक्चुअली किसी की कास्ट है, राइट, एक जाति सूचक शब्द है. तो मतलब हम किसी की मतलब वो एक प्रोफेशन था ना एक जमाने में, तो कोई प्रोफेशन को हम क्यों एज अ बैड वर्ड क्यों बना के यूज करते हैं, राइट? और काफी सारे ऐसे हमारे बैड वर्ड्स हो गए जो हम इतना कॉमनली यूज करते हैं ये समझे बिना कि ये एक्चुअली एक कास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है, और हम कभी यूज भी कर लेते हैं. तो इनफैक्ट क्योंकि मेरे आसपास इतने सारे लोग ऐसे यूज करते रहते हैं, तो हम भी मतलब कोई भी इंसान अपने आजू बाजू जो हो रहा है उससे पूरा तो अनअफेक्टेड नहीं हो सकता ना. तो एक बार शायद मैंने भी गलती से कुछ मतलब मैं किसी और को कुछ नहीं बोल रही थी, मैं अपने आप को बोल रही थी कि मैं ऐसे दिख रही हूँ. एंड देन आई जैसे ही वो शब्द मेरे मुंह से निकला, तब तक मैंने वो शब्द कभी यूज नहीं किया था, पर जब वो शब्द मेरे मुंह से निकला तो सडनली ये स्ट्राइक हुआ और वो कनेक्शन मेरे दिमाग में बोला अच्छा ये तो कास्टिस्ट वर्ड है, Are you व्हाटएवर. talking about the word Shapri? हाँ, not no, it is another word in another language. So anyways, forget about it. Other people may not know that word, but anyways, I know that it's a casteist word. So ऐसे बहुत सारे हैं. तो उसके बाद मैं सडनली कॉन्शियस हो गई कि यार मतलब मैं तो कॉन्शियसली नहीं पसंद करती हूँ चीजें, लेकिन मैं ही ऐसे बोल गई ना. तो इतनी मतलब इनग्रेन्ड है हमारे आसपास ये कास्ट सिस्टम, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम कास्ट नहीं देखते, हम देखते हैं मतलब. और उसका थर्ड पॉइंट ये भी है कि थर्ड पॉइंट उसमें मैं ये बना रही हूँ कि खास करके जब शादी वगैरह का डिसीजन कुछ आता है, तो अब थोड़ा बहुत तो बड़े सिटीज में पीपल आर ओके विथ लोग इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए भी काफी सारे लोग तो अग्री हो जाते हैं, मैंने लेकिन उसमें भी मैंने 3 साल वेट किया है अपनी शादी के लिए बिकॉज कास्ट. हाँ, नहीं तो और उसमें मेरी हाँ और तो मेरी बीवी और मेरी बीवी सरदार है. और तीन तीन गुरुद्वारों ने मना कर दिया था शादी करने से. हाँ Oh हाँ shit. हाँ. नहीं तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं कि अगर ये एक सब कास्ट वाला होगा या ये फलाना ढिमकाना इंटर कास्ट होगा तो वो चला लेंगे, मतलब हाँ एससी या दलित नहीं होना चाहिए. हाँ बेसिकली ये सवाल मतलब पेरेंट्स मतलब चिपक जाते हैं ये सवाल को फिगर आउट करने के लिए कि क्या ये तो नहीं है. तो ये मतलब ये कौन है यार वो लोग? ऐसे ऐसे. बहुत है हाँ, हमारे अच्छा घरों में ही फैमिली है का वो थोड़ा सब लोग. बताओ जरा. कहाँ से, अच्छा क्या हाँ काम करते हैं? अच्छा. हाँ हाँ. यार नहीं मैंने they will उस पे ask, they सोचा will था. ask is he a Dalit or not, they will ask that question, right? They अच्छा. won't be too shy about it also. They want to make sure कि भाई कुछ और होगा, कोई और भी ढूंढ लेना. लेकिन और मैं ये मुस्लिम
तक तो जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है, मतलब वो तो छुपा भी नहीं अननोन सकते। टेरिटरी। इस पे one more very interesting thing that happened is कि there's a mathematics at play ना, कि if you're marrying caste से बाहर, रिलीजन से बाहर, तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा। जैसे जब मेरी बीवी का पहली बार उनके फैमिली में पता चला था मैं दलित हूँ, तो उसकी मम्मी ने उसे बोला था, बेटी तू तो लंगड़ी भी नहीं है, फिर ऐसे शादी क्यों कर रही हाँ या एक्चुअली तो वो मैथमेटिक्स भी पूरा एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। बट एक्चुअली इससे कास्ट डिटेक्शन से पता चला, इस महीने के लिए मैंने सोचा था मे बी नेक्स्ट ईयर बनाऊंगा अ न्यू प्रोडक्ट बाय पुलिस की डॉग ट्रेनिंग एकेडमी, कास्ट स्निफर डॉग। वो सूंघ के कास्ट बता देता है कुत्ता। AI built, AI powered ऐसा कुछ। नहीं नहीं भाई, वो तो तू प्रार्थना करके कंप्यूटिंग इंडिया में इन्वेंट नहीं हुई, वरना हम लोग को मेन वाला हाँ। मैक मिलता भी नहीं। कुछ तो पंगा रहता, या मे बी कोटे में मिलता और फिर उससे दंगा हो जाता। हे भगवान। हाँ। I would like to take a moment to appreciate the beauty of the word "unshund" as spoken by Khyati, which is a beautiful word. Oh, I think, and I've heard it for after a very long time. So thank you, Khyati, for this reminding me of this vocabulary which I had forgotten. Unshund, क्या बढ़िया। नहीं एक्चुअली में कुछ शब्द की साउंड इतनी फन होती है ना, ऐसे unshund, हाँ unshund बातें मत करो। वाओ, ब्यूटी। Also about that race, हाँ sorry, मुझे पता ही नहीं मैंने कहा ये शब्द यूज कर लिया। देखो हमको पता ही नहीं हम क्या बोल रहे होता आधा टाइम। नहीं पर मैंने ऐसे लिखा था ना, ऐसे क्या बढ़िया है या यूज करना है अब फिर से, वापस लेके आना है मुझे अपने उसमें। हाँ हाँ तो मैं अब हिंदी पॉडकास्ट करती हूँ ना, तो मैं एकदम कॉन्शियसली हिंदी वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करती हूँ। अच्छा इसके लिए पॉपुलेशन के लिए क्या वर्ड है? जनसंख्या। जनसंख्या बोलेंगे हम। नहीं सही है, और क्या बढ़िया है। या Also, श्रीकांत इज लाइक आप adding to आईएएस के that, लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या? सही में। हाँ तुम कुछ कह रहे थे, एक सॉरी और आई चीज कट मुझे यू याद ऑफ। आई। हाँ अब नो आई वाज जस्ट सेइंग, आई वाज मेरे कुछ एक इंसिडेंट याद आ गया व्हेन यू वर सेइंग अबाउट दैट यूजिंग कास्ट एज अ स्लर ना। तो एक लाइक वेरी स्मॉल रैंडम इंसिडेंट, बट मैं एक दोस्त के घर गया, उसके बाथरूम के शीशे पे चमार लिखा हुआ था, हाँ ठीक है, मार्कर से। तो अब ऑब्वियसली मतलब ऐसा आई वाज लाइक कि क्या है ये, मतलब क्यों तेरे शीशे पे चमार क्यों लिखा है? तो कहती है कि हाँ वो मेरी रूममेट है ना, वो मेरे को तंग करने के लिए ऐसे लिख देती है कभी कभी कि ना। और मुझे इतना मजा, मेरी हंसी छूटा पागल, मैं हंस हंस के पागल हो गया 2 सेकंड के लिए। ये इनका अलग एक गेम चल रहा है, मतलब ये दो ब्राह्मणों का अलग गेम चल रहा है जिसमें ऐसा एवरीडे बेसिस पे ये सब ये फन है, ये अलग जूस ऑफ लाइफ है। सो या आई वाज लाइक गुड जॉब, ग्रेट। आप ही के कंधों पर है हमारे देश का भविष्य। ये वो है, इस पे वो बोलना चाहिए, जुरासिक पार्क में वो लाइन नहीं बोलता, लाइफ फाइंड्स अ वे, सो उनसे कास्ट फाइंड्स अ वे, कास्ट फाइंड्स अ वे। और ये रेसिज्म फाइंड्स अ वे। हाँ, और ये पक्का ये इस इंसान के साथ तुम ऐसे नॉर्मली बात करोगे तो मैं तो नहीं मानती है सर, यू नो वी आर ऑल मॉडर्न पीपल यार, हम तो ये सब बातें करते हैं, तुम पता अंकल आंटी लोग करते हैं सब बातें, ये वही लोग नहीं, हैं। मोस्टली ये सब वहीं से बता रहा हूँ यार। ये जो नया रेनेसॉ होता है ना, पुराना तो हो गया तो हो गया। ये जो स्कूल में 10th में नहीं समझाते ना क्यों मिल रहा है, वहां रेनेसॉ होता है कास्टिज्म का, वहां नए दाविंची पैदा होते हैं। तो वहां वहां ये क्यों नहीं कर रहे, आई रियली डोंट नो, बिकॉज इट लीड्स बोथ साइड्स इन डीप कंफ्यूजन। दोनों साइड्स को ही नहीं समझ आता कि भाई हमें क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा ट्रू। तो आई हैड अ क्वेश्चन, मतलब इतना हमने डिस्कस कर लिया कि इतने सारे कॉमिक्स है, मतलब मेरा है कि people still talk about casteism in past tense ना, अभी जो भी बोल रहे हो हम आंटी के जमाने में होता था, but it's still happening right, like ख्याति ने बोला, तो प्रेजेंट टेंस में बात नहीं करते। so what do you think, मतलब you guys create art that is you know talking about contemporary issues जो अभी हो रहा है, ये jokes अभी भी मारते हैं लोग, तू दलित नहीं दिखता, you know, like you are privileged, this concept of privileged
Dalit also is there. Like, what do you guys think about it? And also, again, ये भी है Dalit Lalit का कि now that Sumit is turning it into knowledge देने वाला comic, do you think it's the onus is on you to educate others कि तुम्हें नहीं पता, No, अच्छा हम not at all. बताएंगे. हाँ, so भाई this also मतलब I had a question कि now that he's making a comic, like not everybody. No, so basically हर दलित जो है ना, वो पूरी लाइफ दो चीजें करता घूमता है. एक है एक माइक्रो ट्यूशन देता हुआ, कि जो भी कोई एक पूछता है तो वो एक उसे छोटी सी ट्यूशन देनी पड़ती है 10 मिनट की. हाँ भाई, मतलब कि- ये you're और carrying दूसरा, burden भी ऊपर है आपके ऊपर. हाँ, और दूसरा एक डिबेट होता है पार्टीज वगैरह में, जहां भी पता चल जाए आप दलित हो, कोई एक चीता बैठा होता है वहां, पूछता है बट रिजर्वेशन डजंट मेक सेंस यार, और फिर आपको पौना घंटा गया आपका, आप बताओ उसे समझाओ. तो बट दैट ऑल्सो इज like something which I'm like part and parcel. I take it के ठीक है, have to do. इस comic में भी I make fun of that fact only actually, because it's a conversation between two people, so that other guy says the same thing. And I think Shikhant very rightly said कि as such कोई इतनी responsibility नहीं है कि हम जाएं सबको समझाएं. एंड उस बारे में एक्चुअली आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट मनल का पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब when you did your stand up from a very Dalit perspective, strong perspective, and I write about being Dalit, but it's not the uh, like I'm not sure how much of your material is about being Dalit, so I wanted to discuss and उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है काम पे, नहीं पड़ता है, वो मुझे पूछना था. तो ना लेट्स मूव अवे फ्रॉम स्टैंड अप ब्रो. स्टैंड अप मतलब तो दिख ही जाता है कि कौन सा वरना कॉमिक है, क्या 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 है वो सब. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ I don't know on what point, but I wanted to add this on my most recent experience, right? So I work in an advertising agency. I've been in advertising world in copywriting since 3-4 years now. And what's really fucked up is, right, that I have around 4 years of experience, right, as a copywriter who works in ad agencies. But but my boss who just got hired, who's my supervisor, has what 1.5 years of experience, and she's a Sharma. So and there's another Sharma comic who's my like good friends with me, and I keep helping her to get ad agents. So basically comics side में सब copywriting ही करते हैं, ऐसा easy shit like so like it's a little, it blows my mind that these two Sharma girls, right, my new boss and my friend who I have been helping to get in, they are getting paid way more than me, with way less experience than me, and with way less skill of this shit than me. And I'm not saying I'm some great copywriter or anything. I'm like average only. Okay, so it's just that. So I'm not saying that I get paid less or I don't get a job because I'm Dalit. But these Sharma people get a higher position and a higher pay, and they are not ready to accept कि it's because कि उनका last name में शर्मा है इसलिए उनको इतना मिल रहा है, ठीक है, like और इतना position और pay जो भी मिल रहा है. And I keep trying to tell them, bro, see, if you don't have the experience, if you don't have the skills, so then what do you attribute your higher pay and higher experience? And they don't have an answer. They are like कि मैं सुंदर हूँ, ये वो बंदी सुंदर होगी, वो सब चित्तेगी, ठीक है. तो सुंदर तो मैं भी हूँ. uh, So like, so I don't have an answer to this. It's just that see, this is like in stand up तो अरे यार stand up के मैं क्या बात करूँ, तो stand up तो fuck all ही है. But नहीं, like खोल right, खोल अपने अपने दिल का दर्द खोल के बता. so that's why I moved to Bangalore, right? Like I saw a lot of like I started off with the same shit that I don't deserve reservation. मैं बैंड्रा से हूँ मुंबई में, और अच्छे स्कूल वूल में गया हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश बोल लेता हूँ ढंग से, तो मेरे को क्यों रिजर्वेशन चाहिए. पर फिर पैंडेमिक में मैंने I basically once my video viral went viral no on Twitter,
that's when I was like, fuck, I cannot continue doing the punching down jokes. Now the audience that I've got is like, they expect and like a proper anti-caste shit from me. That's when I started reading Ambedkar and everything, and engaging with my audience online, like the friends that I made, the followers I got, and like just seeing what the fuck is everybody else up to, like in the anti-caste space. And like talking to them and reading stuff, I realized that reservation is not about it's not about poverty elevation thing. It's about representation, right? तो representation कौन करेगा? अब मतलब मेरे को वो privilege मिला है represent करने का, तो मुझे वो उठाना पड़ेगा वो, and the onus and all that thing, right? कि मतलब तुम्हें onus उठाना है तो तुम उठाओ, चाहे तुम upper caste हो या दलित हो, और तुम्हें लगता है तुम्हें onus उठाना चाहिए, तुम उठाओ. तो there is a perspective which says कि मुझे I don't have to take the onus of educating anybody about this, but I have taken it because uh, I don't know what else to do with my life than this. So I have taken this, and तो वो सब पढ़ के वो सब एंगेज करके मेरे को समझ गया क्योंकि फाइन अभी रिप्रेजेंट कुछ करना तो मेरे को ही करना पड़ेगा. ठीक है. मतलब बाकी लोग भी है, देयर आर अदर दलित कॉमिक्स, बट लाइक आई वाज द फर्स्ट वन हु ब्लू अप, राइट? So I took that upon myself, and before I took that upon myself, a lot of comics in Mumbai, right, like the producers, the comedians, they told me to stop talking about caste, like in my stand up, and they told me कि तू इस टॉपिक के अलावा कुछ और मटेरियल निकाल के बता जो उतना ही ज्यादा किल करता है, फिर हम तेरे को और स्टेज टाइम देंगे, वो सब चीजें. तो वो सब एक्सपीरियंस करके मेरा दिमाग फाक हो गया ब्रो, बिकॉज लाइक स्टैंड अप इज अबाउट बीइंग ऑन ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योर आइडेंटिटी. Exactly. And you know why that is funny? That is funny because there are endless number of stand-up comedians who actually their whole material is about their community. There are like Exactly, there's this पंजाबियों one में तो ऐसा stand-up. होता है और Punjabi भी South नहीं. Indian में I'm not ऐसा. even doing state. There is this one अच्छा. stand-up comedian जिसका पूरा material is संदीप about his शर्मा. caste, about being हाँ. Dalit. Right. And Yeah. I'm like, True. there's more people who are like Gujarati हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, तो that's Yeah, allowed. exactly. And why Mhm. they would have a problem is because again nobody wants to touch, like Indian way is to shove it under the carpet. That is the grand Indian way. Yeah, dude. So I experienced all that shit there, right, in Mumbai. And Mumbai also has this shit about कि तुम्हें स्टेज पे चढ़ना है तो तुम्हें 200 रुपए देना पड़ेगा, एक ऑडियंस मेंबर लाना पड़ेगा साथ में, which wasn't the case when I actually started off with Adhiraj in 2015. That time it was a free thing. But like over the years when Mumbai scene became so capitalistic, and that's why then I moved to Bangalore, because Bangalore does not have that bullshit here. Like the like मतलब वो it's free of cost to get on stage, and like Bangalore has this thing about कि if you are doing well on stage, or even if you're not doing well on stage, but if you're saying interesting things, you will they will give you the priority, like and I'm experiencing that here, and like yeah, like I don't know what point I was trying to make, is that ki, I moved to Bangalore to get away from the capitalism and the casteism in Mumbai. Here the casteism is like it's normal comic casteism, bro. मतलब तुम कोई गे होगा या कुछ भी होगा तो उस पे जोक्स बनाएंगे, मतलब या जो भी होगा, like like it's not कि तू दले दले तेरी गांड मारेंगे, ऐसा कुछ तो भी सीन वो मुंबई मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ था. Like maybe also because I was young, I was like 17 18 when I started doing stand up, and everybody else was already like in their late 20s. So like me being so much younger than everybody else was also a thing. But now I'm 25, and I'm in the same age group that anybody else is right now. So like Yeah. No, I feel you as a fellow 24-year-old. I feel are you 24? 41. Yeah. 24. I'm just living through my wild 20s. I'm just going through hair loss. That's all. No, that's 24. not
I'm 24 completely. Yeah. But Manal, I actually wanted to know ki, like you said, ki people were stopping you from making those jokes, right? Like about caste, right? Uh, so I'm sure there would be other powers at play for in terms of कि मतलब for other comedians also I'm sure it's equally difficult for let's say women और ऊपर से अगर मान लो I'm sure I don't know other Dalit comedians as much तो also मैं of lately stand comedy ज़्यादा follow नहीं किया था I don't know but what has been like other Dalit comedians or women comedians maybe women Dalit comedians or other people who you would have met with in Bombay how has been their experience and maybe if you can tell us a bit more about कैसा रहता है Okay. So, I run this thing. I don't run it. All the Dalit comics in Mumbai run it, which is called Blue Material, which is a okay all Dalit lineup of comedians. And but before we made something known as Blue Material, right? Uh, and even now, even till now, I see that a lot of comics, whoever are Dalits, are very apprehensive to come across as कि मैं victim कि I'm as a victim like they don't want to like they're like कि माचुदा है fame या जो भी clout और जो भी मेरे को मिला ना मैं जो भी victim जो कर लिया खुद पे तो उनको they don't want that fame on those grounds like you know like अगर मैं कुछ फाड़ेगा कॉमेडी में तो मतलब विक्टिम बन के नहीं फाड़ेगा तो और आई कीप ट्राइंग टू कन्विंस दीज पीपल दैट यू आर नॉट like you are owning that shit, right? And Yeah. they are owning it much better than me, like you know. But I just it's like a lot of people are apprehensive to come out and talk about it, like and get that fame or something out of it or whatever it is. Like they don't want to be associated कि मैं victim card खेल रहा हूँ तो उनको उतना ज्यादा सोचना पड़ता है उनके मटेरियल के लिए और टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का आई होप यू आर लाइकिंग द एपिसोड दिस फार वैसे आप बकरमैक्स आते हो कॉमिक्स पढ़ते हो मस्त एनिमेशन देखते हो वो भी एकदम फ्री कभी सोचा है बकरमैक्स पैसे कैसे कमाता है वेल बकरमैक्स पैसे कमाता है थ्रू क्लाइंट वर्क वी डू अ 50-50 मॉडल विद 50% ऑफ आवर टाइम हम अपनी ओरिजिनल स्टोरीज पर काम करते हैं और 50% क्लाइंट वर्क उसकी वजह से वी आर एबल टू कीप बकरमैक्स फ्री So, refer us to your friends, family, colleagues, exes, potential love interests, or whoever else you think we could or should work with. You know a brand who you think should make an animated film? We are your people. You know a brand that could do with better branding perhaps? Get us in touch. Do you need a comic made for your girlfriend, wife, mother? Perhaps an invitation card? Write to us today at whothis@bakarmax.com. You can slide into our DMs or write us an email. All the information can be found in the description below. I was actually waiting to say this thing कि ये ना एक चीज जो जनरली है वो ये है कि जो the only thing I think that predates casteism as a form of differentiation is gender. जो विमेन के साथ गेम हो रहे हुए फ्रॉम पता नहीं 1000 BC सॉरी 10 20 50,000 BC पहली बार जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ तब से एंड जैसे कोई जब मजाक मजाक में बोलता है ना कि तू तो ऐसे भंगी जैसा दिख रहा है या कुछ तो हमें चुभता है कि यार गलत है ना मतलब मत बोलो कास्ट का वैसे ही गालियों में भी होता है कि जब हम कोई किसी को बोलता है ना ऐसे कि यू नो लड़की जा जैसे रो क्यों रहा है नहीं नॉट इवन दैट इवन द वर्स्ट फॉर्म्स राइट माँ चुता बहन चुता ये सब तो उसमें भी मतलब आई नो शायद मैं ऐसे आई आई मतलब कहीं हो ना हो मेरे से भी अगेन वही वाली जो ख्याति बोल रही थी ना कि मुंह से निकलता है तो वही के
मेरे भी मुंह से निकलता है एक्सट्रीम एंगर बाय में। द वे मैं ऐसे एंड बहुत ज्यादा नहीं बोली हूँ, मैं एक ही बार बोली हूँ, मतलब तो मैं जस्ट टू क्लैरिफाई। चल 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 नहीं चल सुमित ने ब्रांड कर ख्याति, दिया। नो चल ख्याति, no, when she came to my place, I think she got drunk, and all that time she was giving casteist galia 24 hours. She went outside. Kathy went outside on the road and also fought with 5 more people, broke 2 cars. Then Khyati screamed at the sky and said, "Kaun hai Bhagwan teri maa?" And then she passed out. I had to drop her at the airport. But no, I'm saying only thing I was saying is कि वो गाली सुन के ये हुआ कि वो मेरे मुंह से भी निकलती है। एंड जैसे मेरे घर में रूल बना हुआ है कि ये गालियां नहीं देनी विमेन वाली, और कभी कभी मेरे मुंह से भी निकलती है, तो वही है, रियलाइज होता है कि वो इनग्रेन्ड वाली चीज इज अ थिंग। हाँ, इतना माहौल में है ना कि तुम चाहो तो भी इतना आसानी से, मतलब तुम कॉन्शियस हो सकते हो कि तुम कॉन्शियसली नहीं करो, लेकिन सबकॉन्शियसली हम बहुत चीजें बोल देते हैं, ऐसी चीजें मतलब नहीं बोलनी चाहिए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट इसीलिए मुझे वो कास्ट में भी लगता है ना कि हल्का सा जो एक वो है ना कि देयर शुड बी अ डोर ओपन for people who want to learn, educate, self-correct themselves, be an ally to caste, and Right, उनके लिए there should always be a big door open. कि if they're definitely. ready to participate in a discussion, be curious, तो वो हमेशा आए तो हाँ थिंक होना चाहिए। एंड मतलब पावर टू यू यार मनल, द ब्लू मटेरियल ग्रुप इज समथिंग आई वेरी फॉलो रियली, मतलब डीपली, लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू कब परफॉर्मेंस है। आई थिंक अभी सरकार's परफॉर्मेंस वाज हियर इन बैंगलोर, या एंड हाँ just plugging in some shit, which is that I am planning a blue material festival, which is not limited to just comedians, where I'm trying to get in rappers, singer-songwriters, filmmakers, digital artists, and probably now Bakarmax. Now that I know that you guys are also या in this, right? या To have a festival of आई all art forms with anti-caste artists. So आई come for that, thanks. I absolutely hate it when everything's put together, like cartoonists come at the very end. Like whenever they're creating an ensemble thing, na, I didn't we'll know, get man. I didn't comedians. know. I We'll didn't get know. I no didn't no. know. I It didn't it know. it happened me all my youth na कि मतलब there's this musician who ऐसे जिंग करता है and there are 4 girls and मैं pencil कर रहा हूँ and like I'm alienating, girls are going away from me. So सुमित की हाँ इनसिक्योरिटीज बाहर आते yeah, हुए दोस्तों। I hate it. Cartoonists land at the very end of all social structures. अच्छा, एक्चुअली मनाल, Bro, आई Oh, maybe but you'll be the next Bala Sahib Thackeray. so that's what I tell anybody when they say, I say, see, if you mess with a cartoonist, you get a Bala Sahib Thackeray. So you let them keep making their jokes, their things. Don't वो उसमें let them खुश रहने into. दो उनको। हाँ, उसमें खुश रहने दो उनको. So actually, Manal, I wanted to add one thing when you were saying about that victim card thing and also the blue material stand up वाली चीज के अंदर, right? तो वो जो victim card वाला जो एक डायलेमा है ना, एक क्वेश्चन है सबके दिमाग में, राइट? वो आई थिंक सभी को कभी ना कभी वो एक आता ही है, स्पेशली हम लोग को ना, कि जैसे मेरे को भी बहुत टाइम तक मैं उससे भी जूझ रहा था कि यार ये आइडेंटिटी को ऐसा ढिंढोरा पीटना है क्या, बिकॉज वो हाँ वही बहुत बहुत आसानी से ना क्या हो जाता है, दिक्कत क्या है ना कि लोग फिर आपको ना वैसे ब्रांड कर देते हैं। मतलब जैसे ये चीज ना, आई थिंक लास्ट वीक या कुछ दिनों पहले सुमित और मैं बात कर रहे थे कि हम क्यों बोझा उठा के घूमे ना अपने आइडेंटिटी को चेपने का सब जगह। मतलब क्लियर, ऑफ कोर्स, आई मीन जहां पे भी मौका मिलता है वहां पे हमें बात करनी चाहिए और उसके बारे में जहां तक हो सके एजुकेट करना चाहिए अपने आप को भी, दूसरों को भी, सब कुछ। बट मतलब मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है दुनिया भर को ज्ञान फैलने का। मतलब तुम भी खुद से कुछ मेहनत करके हाँ सीखो ना। मतलब और मतलब मैं अपनी जिंदगी में दिक्कतें भी झेलूं और उसके बाद अपना और टाइम वेस्ट करूं तुमको ज्ञान देने में,
नहीं भाई मैं अपना काम करूंगा चुपचाप से, भाई मुझे रोटी कमानी है, उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगा ना, मतलब क्योंकि I have to work slightly harder than other people, right, to do shit. So same goes for that. तो वहां पे ना फिर वो victim card वाला angle, I'm sure it's difficult for a lot of people to come out and just be, you know, बेबाक तरीके से उस बारे में बात करने का, क्योंकि वो है ना दिमाग में एक सवाल कि यार ये करूंगा तो ब्रांड हो जाऊंगा, और फिर उसके दो तीन रिएक्शन होते हैं ना जो टिपिकल रिएक्शन है। एक तो I like it when ना सबको मतलब ऐसा, I remember I was having this few days ago I was having this meeting with one of my client and कुछ तो आर्ट वार्ट की बात चल रही थी, like you know that Dalit artist makes these kind of paintings, you know, मतलब वो आर्टिस्ट नहीं है, वो पहले दलित है फिर वो आर्टिस्ट है। तो वो एक हो जाता है आपके साथ, you know, कि वो एक प्रॉब्लमेटिक भी है थोड़ा सा ना। तो वहां पे एक बड़ी फाइन लाइन है जो मतलब आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट, बट या वो एक एरिया ऑफ वेगनेस कि कहाँ पे क्या करना चाहिए इंसान को, क्योंकि बहुत इजीली लोग आपको उस बक्से में डाल देते, फिर कल को उस इंसान बोले वो निकल ही नहीं सकता उस बक्से से ना, क्योंकि अब उसका काम वो है, वो दलित पेंटर है, वो दलित पेंटिंग करता है, मतलब ऐसा नहीं होता ना, तुम मतलब वन इज अ पर्सन इज मच मोर देन जस्ट बीइंग दैट। मेरा ओपिनियन उस पर ये है कि I have also faced and gone through this exact same thing that you're talking about, right? But this is how I talk to myself. I say this to myself when I deal with this question, which is कि अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, right? कि मतलब अगर मैं ब्लू मटेरियल नहीं बनाऊंगा, ये चीजें अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा है ना। So the same with Bakarmax, same with Shikhant, man. Like I mean, we all bring our own unique perspectives to the table, right? Right. And Right. who else would do it? Who would bring your unique perspective if not you? And even if we put the mantle on the upper caste people कि तुम खुद educate करो और करो, तो वो educate खुद को करके कैसा manipulate करेंगे अपने को कैसे पता, right? Like you know, वो तो मैंने वो कुछ भी करके manipulate करके like वो कुछ भी बना देते हैं, like there are so many allies who are not actually allies but they call themselves Right. allies, you know. So True. we need to take it away from the false allies, right? And ये मैल्कम एक्स की याद like दिला दी I तूने, do बिल्कुल। किसकी? मैल्कम एक्स कहता था ना वो बात कि जो गोरे लोग जो काले लोग के एलाइज होते हैं वो भेड़िए होते हैं। ओ भाई सीधा ही वो ऐसे पूरा बोलता था वो ओपनली कि एलाई वेलाई कुछ नहीं होता, झूठी बात है। सो या I know it's a very romantic way of looking at it. If you want, who else will? But no, I I'm a no, romantic. but now that you have said it, I also like I agree with you also कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है, करना है, of course you have to tell your story, but वो मेरे लिए वो वाला क्वेश्चन कि if not me then who comes for all my work, not just when I'm talking about the list. Shikhant, that becomes then the larger topic of कि सबके अंदर कोई कहानी है जो उन्हें कहनी, सिंपल बात है। और वो क्या है is the job of doing what we do is to find it ना, क्या है वो। I actually wanted to just add this thing which sort of became a thing very recently, and I don't know, I've repeated it 2000 times now, but I believe there's merit in just putting it out. And I'm also doing it in my comic, is just to see how old caste is, right? And whenever I talk to people about caste, a lot of them tell me कि ये तो जैसे ये है वैसे ही अलग अलग रिलीजन का भी डिफरेंस है, ये है। एंड आई ऑलवेज टेल देम नहीं 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 नहीं, सब रिलीजन्स में कास्ट है। क्योंकि कास्ट तब से है जब से वो हड़प्पा से पहली बार इंडो जर्मन आए, तो उसके बाद जितने धर्म आए हैं उसमें दलित्स वुड एस्केप कास्ट, एंड वहां दे वुड फाइंड other upper caste people already new converts, right? And then again caste would be introduced there. So caste is in every religion, and people for example think पंजाब में नहीं है, पंजाब में है, हर चीज में, क्रिश्चियनिटी में है, मुस्लिम्स में है, सिखिज्म में, हर चीज में कास्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ माइक्रो ट्यूशन
But one more thing is कि how old it is, right? And how old it is का simple metric is that what I did in doing in my comic is somebody tells this character ke how does it feel to get a red carpet welcome everywhere you go, and I then started drawing that red carpet, and it Call it a ends at blue night. carpet welcome. एक्चुअली हाँ ब्लू कार्पेट, बट उसके लिए उसको पता होना पड़ेगा ना जो बोल रहा है, उसको नहीं पता है. हाँ, तो हाँ, एक्चुअली बट आई डू दिस कि वो करेक्ट करेगा उसे कि ब्लू कारपेट कारपेट वेलकम, बट it ends at 1947, right? And then you backtrack from 1947 before reservation, right? So usme, let's say there's a person, a gora person who wants to open a Darjeeling में टी गार्डन. वो किसको ढूंढ के लाता है? अपर कास्ट पार्टनर फॉर बिजनेस, राइट? उससे पहले फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पीपल, और उससे पहले भी मल्टीपल डील्स हो रहे हैं, उससे पहले ब्रिटिश पीपल स्टार्ट द सिस्टम ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, राइट? उसके लिए उनको हायर करना है. किसको हायर करेंगे? जो उस टाइम पे सबसे एजुकेटेड है, राइट? हु कैन कम क्लोजेस्ट टू देम, राइट? उसके अलावा पहली बार दे आर फॉर्मिंग द आर्मी, दे आर हायरिंग पीपल फॉर द आर्मी. हु वुड दे हायर, right? The only reason they actually used to hire Dalit people is because Muslim and Dalit people, they used to hire slightly because upper caste people used to have a lot of problems with food and crossing seas. तो दे दलित और मुस्लिम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो इस आर्मी में थोड़ा बहुत चलो वो हायर कर लेते थे. बट बेसिकली कोई भी जब इंस्टीट्यूशन बन रहा है पूरे ब्रिटिश एरा में, देन यू हैव कास्ट, राइट? यू बैक ट्रैक फ्रॉम दैट, देन यू गो इनटू मुगल हिस्ट्री, राइट? बाहर से जो भी आदमी आएगा उसके साथ जो पहला आदमी ट्रेड करेगा वो वही होगा जो ट्रेडिंग कम्युनिटी से है, अपर कम्युनिटी से है, राइट? तो इमेजिन you, and you're still Mughal, right? You keep backtracking it. You go into the Mauryan Empire, you go into Chandragupta, you go into all those times, and this whole time, Mauryan Empire, they say सोने की चिड़िया, world का largest GDP. उस time पे these people have the same story, and you backtrack that all the way to the era of Vedas, right? And imagine this group of people that long consistently being told you're not good enough every single day. Now, to put it into context, there's this Russian scientist who basically took foxes, and he started throwing out aggressive foxes and kept docile foxes. 70 साल में he has now a breed of foxes जो पूंछ हिला रहे हैं. So in 70 years you can domesticate fox. It took 10,000 years to turn wolf into dog. Now imagine 3,000 years, you keep telling a group of people you're not good enough, you're inferior, you're not good enough, you're inferior. It reaches evolution level that you deep root this in them so badly that matlab, reservation is nothing compared to the damage it causes. You know, if you give them bigger chances, for example, if I get a chance today, as my company, somebody, a hedge fund in New York calls me, okay, come on, let's sit on the table, talk about a deal. That all those things will play out. That inferiority complex, those kind of that 3,000 years of things that have been hammered, I will have to fight my best self against it. Right? So those things, it's a big thing. That 3,000 years is not a small duration of time. 2,000 years, 3,000 years is a big, big deal of time. That's an evolution level time, right? So this literally, Dalits, if not another religion, there are different species. They are Homo Dalitas, Homo Bluers, something. But and I still don't understand. I think I would actually want Shikhant to talk about what happened in South Africa, which he spoke about last time. And I don't know if you're going to edit from the old one, but that was a very important thing he said. Now I don't remember what did I say. The last That when podcast. South Africa Sorry. became independent. Right. हाँ, actually उसका थोड़ा context भी शायद देना पड़ेगा. Last time when we were recording this podcast, तो something came up which was about
Khyati, can you help me here? I'm sorry, I'm forgetting the exact discussion, but I think, okay, so maybe if I have to, I think that point I was trying to make is that for an upper caste person, right, who does not feel that कि ये caste hierarchy सही चीज है, right? Like I was not able to explain it last time, but maybe I can explain it like this, that like I cannot say that, you know, I for an upper caste person to say कि अरे मैं ये identity को own करूंगा, that is like perpetuating that discrimination, right? So for a for an upper caste person to not perpetuate that is to say कि भाई ठीक है मैं इस hierarchy को नहीं मानूंगा, right? It does not mean the same for a Dalit person, because that was अच्छा, the हाँ, right. so that is what I was not right. able to explain you last time. हाँ, But I think for a Dalit person it's not the same, because that was an access for discrimination against them, right? So it makes sense for them to own up to it and assert that identity कि भाई है हम तो क्या, तुम लोगों ने तो you did this to us, right? So it is different, because these two people, like when I was trying to say that I'm anti-caste in the sense, not that I'm saying that we should forget all this discrimination. No, that was not my point. It was my point that for me to not perpetuate this kind of discrimination further, I will have to say that I do not see myself in this. Like I see this hierarchy not, I mean I cannot also say that, बिकॉज हम एक्चुअली उसमें एक और एक एंगल भी है कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैं अपर कास्ट नहीं हूं तो क्या उससे हो जाएगा, मतलब मैंने जो प्रिविलेज इकट्ठा किया है पिछले 2000 सालों का, जो मेरे फैमिली के थ्रू मुझे मिल गया ना, मतलब आई मे नॉट हैव डन एनीथिंग discriminatory to somebody else, but I have unwantedly also taken advantage of that through just the social capital, that just the accident of birth ki if you are born in this family, it decides a lot of things for us in India, right? And that is many axes, right? Caste is one axis. Surname is like a credit card. तो right. इवन अब तुम अपना नाम भी, ये एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जो बहुत कॉन्शियसली वो बोल रहा था कि मैं अपने नाम भी चेंज करने के बारे में सोच रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू कैरी ऑन टू, बट देन ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ही सेड आई थॉट अबाउट इट एंड आई थॉट कि अगर मैं नाम भी निकाल दूंगा तो भी क्या, मैंने उसका फायदा तो उठा ही लिया ना. जस्ट बिकॉज आई एम बोर्न टू दिस सेट ऑफ पेरेंट्स, मुझे वो फायदा मिला है, तो अब मैं उस आइडेंटिटी को एक्चुअली पूरी नदारत तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब बट इन सॉलिडारिटी आई कैन से ओके, एटलीस्ट आई do not wish that that becomes my identity. I do not want to perpetuate it any further to my children. I mean, at least that is an effort we can make, and we can try to make a world where this identity is no longer an axis for discrimination against a set of people. That is the effort right. we can make. And then you made another this I did no, not I get explain it. properly. No, what I was actually talking about is the point Shikhant made about now. equality. I remember now. So actually क्या last time जब हम बात करते तो हाँ, ख्याति I remember हाँ now. So the point was कि it is very easy for somebody who comes from a privileged place to say कि अब कल से सब equal है ना, पर ऐसा नहीं चलती है दुनिया. तो साउथ अफ्रीका का एग्जांपल मैं दे रहा था कि वहां पे ऑल्दो हम सब मतलब ऐसा फेवरेट है ना दुनिया का नेल्सन मंडेला, बट lot of South Africans, especially black South Africans, do not agree with lot of Mandela's policies because जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म हुआ 90s में, तो what they did was they started a truth and reconciliation committee, right, headed by Desmond Tutu, जो कि सारे यूएन के प्रोग्राम्स में जाता था, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड उसका फैन था सब ना लोग, ठीक है. अब उन लोगों ने क्या किया, उस कमेटी का काम ये था कि भाई जिसके साथ बुरा हुआ है तो माफ करो, आगे बढ़ो, बेसिकली, ठीक है. अब सुनने में बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रूल्स एंड बाइबल इज ग्रेट एंड ऑल दैट, बट भाई उस इंसान का क्या जिसके 300 साल पहले जिसके सारे खेत छीन लिए ना गोरे आदमी ने, अब उसको तुम ये थोड़ी बोल सकते कि भाई चलो ओके थैंक यू बाय बाय, अब तुम ना सब बराबर हो, अब कल से कोई सब बढ़िया रहेगा, दुनिया सब बेस्ट, अब डेमोक्रेसी आ गया है, सब वोट, सबके पास वोटिंग राइट इक्वल है. तो ये ऐसा नहीं होता ना दुनिया में. तो वो वाला पॉइंट था कि जब हम बह रहे थे ना वो, और उसके बाद आई थिंक हम वो भी बात कर रहे थे अबाउट इंटरनेट एंड दीज व्हाट इज द वर्ड पीपल यूज, एको चैम्बर्स, है ना. तो वो वाली चीज है कि भाई एको चैम्बर तो तब होगा ना जब एको हो रही है, आते एको नहीं हो रही, बंदा ही एक है,
जो बोल रहा है को तो तब होगी ना जब होंगे कुछ जो लोग ऑनलाइन जो बातें कर रहे नहीं, होंगे इसमें वर्ल्ड। इसमें बस सो वही था जो, वो हाँ, है कि वो जो इट्स नॉट अबाउट कि भाई इक्वल हो कल से सब, इट्स अबाउट उसके लिए यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ना टू मेक दैट इक्वल या चेंज। इट्स नॉट कि या मतलब कल से आपने बोल दिया कि भाई अब सबको एक ब्रेड मिलेगी, भाई किसी को 4 खानी थी तुमने उसको एक दे रहे हो, तो लॉजिक नहीं बनता ना वहां पे। हाँ, ऐसा है वो। बेसिकली एक फेंस है, और इस फेंस से डिफरेंट हाइट के लोग हैं, और हम चाहते हैं वो सब फेंस से उस तरफ देखें, तो उनको स्टूल अलग अलग मिलेंगे उनकी हाइट के हिसाब से, तभी उसको इक्वालिटी कह सकते हैं। तो और बेसिकली एक ये और जो आइडिया है ना कि इक्वालिटी मींस, अगर हर चीज को वहीं फ्रीज करना इज नॉट इक्वालिटी, क्योंकि आप उसको फिर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो, देन यूएस यूके विल ऑलवेज बी, हाँ, दे बेटर ऑफ, यू वोंट गेट योर वीजा, आवर करेंसीज विल बी चीपर, विल हैव टू, मैं जाऊंगा 5 बोरी में 5 लाख लेके, और मुझे $200 के, $200 के 3 नोट मिलेंगे पूरी लाइफ। तो मतलब वो, दैट वाज बेसिकली अ वेरी, आई थिंक, good point that came up, and my point was that growing up in this country, what happens is from day zero you keep hearing, यहाँ ये नहीं होता, यहाँ वो नहीं होता, you keep hearing, I think there's lot of, the colonized brain is a thing, मतलब अक्रॉस कास्ट रिलीजन, सब जो कोलोनाइज पीपल है उनके दिमाग को कुछ तो वो गोरे बर्बाद करके जाते हैं, विच वी आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम इट। एंड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी कीप हियरिंग ना कि यहाँ ये नहीं होता, यहाँ वो नहीं, ब्ला ब्ला, एंड लॉट ऑफ इट इज ऑब्वियसली ट्रू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, यू हैव दिस वन थिंग which is one of the world's best program for equity and representation. Like, it's literally one of the largest programs in the world, and one of the most spectacular programs in the world, which does not just bring out one people out of poverty. वो चावल का बोरा नहीं देता है, वो literally brings out whole generations out of poverty. And I don't understand why it's not celebrated enough. मतलब हम्म। that this program should be peak of pride for everybody who's Indian, that you have this spectacular program and you got it when the country got independence, mind blowing. मतलब या all of us, we can ask all of us, मैं अभी गफार मार्केट में मैं सीडी बेच रहा होता, शिखांत का मोमो का स्टॉल होता, हाँ। इसका पता नहीं बैंड्रा में क्या होता, पर इसका भी ऐसा कुछ गेम होता। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, it brings out generations from poverty. Like, to be a cartoonist is because my father got reservation. I'm a cartoonist today. Same. Not possible, but and हम्म। yeah, it's just और वो जैसे सुमित कह रहे हैं ना अबाउट जैसे आई तो मैं तो फुल दलित क्या बोलते हैं मेजोरिटी एरिया में रहता हूँ करोल बाग में, है ना। तो इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेजोरिटी दलित कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स सब की यही है, कोई जीन्स की सिलाई करता है लिटरली, मतलब मेरे सारे लाइक जो भी दलित दोस्त है मेरे स्कूल वाले, वो मेरे से बात नहीं करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अब एलियन हो गया हूँ ना उनके लिए, क्योंकि ये तो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता है, तो पढ़ाई वढ़ाई करता है, तो ऐसे क्या फालतू आठ वाट वाली बातें करता है। क्योंकि वो सब लोग के पास तो नहीं थे ना उतना अपॉर्चुनिटीज, या वो तो अभी भी वही दर्जी की दुकान पे सिलाई कर रहा है, कोई कोई पेंट की दुकान पे कुछ काम करता है, कोई वो है। अब मैं उनसे मिलता हूँ तो हमारे पास बातें ही नहीं होती करने को, मतलब आई लिटरली रिमेम्बर कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर आई मेट सम ऑफ देम एंड हमारे पास कुछ था ही नहीं कॉमन बात करने को, आप समझ रहे हो? क्योंकि just that small thing कि my father or grandfather took the best use of reservation and studied a little bit more and got and something and somewhere, है ना। and on top of it, now you, when you go back now, when you trace these families, go to the families, you'll find 5 भाइयों में से सिर्फ एक है जो ले पाया। हाँ। you एक्चुअली will you एक्चुअली will find this pattern के, मतलब there is systematic poverty in families. There is systematic, and it's not just poverty, it's systematic. uh, I can say about my family, alcohol runs deep, right?
all these things, right? And that's why I say that Dalit people very directly should relate with Black people, because we have those things, the systematic poverty, the systematic oppression. It's in the system. Like, there is a reason, when we say कि, Dalit people का picture, people imagine like that, काला होगा, ये होगा, वो होगा. हो रहा है ना अभी भी. एवरी डे It is इंडिया में not. जब आपका सुबह घंटी बजती है, कूड़ा उठाने वाला, उठाने वाली जो आ रहा है, कास्ट पूछ लो आप उससे, दलित है. तो माय क्वेश्चन ऑलवेज इज के, एंड व्हिच माय फादर राइटली पुट अप, इज के why don't you talk about this thing? This is 100%. Why do Dalit people have 100% reservation in picking your garbage, in going down a manhole, cleaning your shit? उसमें 100% reservation क्यों मिला हुआ है? और वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज सिस्टमैटिक पॉवर्टी, बिकॉज इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि वो एक कोटे से फॉर्म भर के कॉलेज जा सके. यू गो टू ऑल स्लम्स, यू विल फाइंड दलित पीपल एंड मुस्लिम पीपल देयर. Yeah. तो देयर नहीं, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट. आई एम नॉट सेइंग फॉर और अगेंस्ट अभी, बट आई एम सेइंग कि एक्चुअली वो रिजर्वेशन जहाँ पे एलिजिबल हो जाए उनसे पहले ही इतने सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ ज्यादातर हमारे देश के बच्चे जो प्रिविलेज नहीं होते हैं उसमें बहुत बड़ा प्रपोर्शन दलित बच्चों का ही होगा जो 8th स्टैंडर्ड के बाद ही वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या कोई 10th के आगे नहीं जा पाता है, राइट. वो 12th तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो वो रिजर्वेशन करेगा कैसे, लेगा, राइट. और वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि एक तो स्कूल ऐसी गवर्नमेंट स्कूल में वो एनवायरनमेंट मिलता नहीं, राइट. सो ये और नहीं नहीं, आप अगर एक्सटर्नल गवर्नमेंट फैक्टर, आप हाँ एक्सटर्नल गवर्नमेंट स्कूल में भी फैक्टर भी मिल छोड़ जाए, दो. हाँ, तो उसका फैमिली का भी एक जिन फैमिली में ज्यादा जरूरत है काम करने की तो वो उसके पेरेंट उसके ऊपर फोर्स भी मतलब एक अरे प्रकार का अंदर, प्रेशर होता है. नहीं फैमिलीज के अंदर तो घनघोर जो है ना, दिस इज लाइक अ कैंसर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक द जस्ट टू गेट अ सेफ एनवायरनमेंट टू सिट एंड ओपन अ बुक फॉर lot of Dalit children, it's not there, हाँ because हाँ that's why I'm saying that's why you have to always remember that 3,000-year thing, what it does. और you need to have you need to have a frame of mind to have dreams. You need to have a reference for aspiration. नहीं, मैं कह If रही हूँ your अगर वो reference, सब भी हो ना, मैं ये कह रही हूँ कि वो वो सब भी हो मैं तो वो, उसके बाद भी मैं ये कह रही हूँ वो शायद वो हो भी जाए चलो आज, हाँ बट उसके बाद भी वो सिस्टम इतना अनइक्वल है ना. जो एक गरीब घर में पैदा हुआ होता है उसके लिए उस 12th तक पहुंचना और वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होने के चांसेस ही इतने कम हो जाते हैं नहीं, पर क्योंकि पॉइंट यही है कि वो एक ऐसे पॉइंट, इंसान के साथ ख्याति, यहाँ पॉइंट है कि टू अंडरस्टैंड द वर्ड, बहुत जो हम इजीली यूज करते हैं वो है गरीबी. दिस इज नॉट गरीबी, दिस इज समथिंग एल्स. व्हाट हैपेंस इफ यू पुट टू गरीब पीपल of different backgrounds, this whole, there is a separate kind of जिसको, this is a black abyss which basically if is there. You don't have you don't हाँ, have but Garibi is I'm not actually like a disagreeing. I'm not byproduct, one of the byproducts of हाँ, that पर वो system. वो पॉवर्टी लाइन में भी बहुत बड़ा प्रपोर्शन है, मतलब हाँ रिप्रेजेंटेशन. वही. हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दलित होंगे या बहुत सारे लोग लोअर कास्ट से होंगे, स्पेसिफिकली मतलब दलित ना हो तो भी लोअर कास्ट से होंगे. तो ऐसे एक बहुत बड़ा तबका है. दलित तो मुस्लिम ट्राइबल वो है ना, मतलब वो वो जो तीन ओवरलैप है ना इतना स्ट्रांग है. मतलब द रीजन कास्ट वाज सिलेक्टेड एज द पॉइंट फॉर गिविंग रिजर्वेशन वाज बिकॉज दैट ओवरलैप वाज सो स्ट्रांग कि हाँ हाँ. Also, one more thing that like adding to what Sumit was saying about कि opening that book वाली जो चीज है ना, and I've seen that working out a lot even in like closely in all of our families. yeah, कि मतलब the thought, like the inception of the thought कि हमको एक सरकारी नौकरी लेनी है is a very वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पैर रखा था ना, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वो उस लेवल का काम है उनके लिए. आप समझ रहे हो मतलब, आई एम नॉट क्योंकि डिसएग्रीइंग ऑन दैट. 99.999 दलितों के लिए वो पहुंचे ही नहीं है वहां तक कि वो सोचेंगे कि अच्छा मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है. उसके लिए कि भाई अंडे की रेडी खोल लूं क्या मैं गली के बाहर, वो यहाँ पे पहुंचे हैं. समझ रहे हो.
हाँ उसको है कि भाई अपना अच्छा एक घर का कमरा एक बेच देता हूँ, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो मैं एक मोबाइल की दुकान सर्विस खोल लूंगा, या गाड़ी थोड़े पैसे दे दूंगा सेठ को, तो मेरे को ये कोई नौकरी दे देगा, या और मेरी गाड़ी चला लूंगा, टैक्सी कर कुछ, तो जो भी उसको सबसे इजी एक्सेसिबल मिल रहा है। और वहां पे थोड़ी है कोई रिजर्वेशन, हाँ वहां पे तो वो जा रहे हैं नौकरी करने, और उसका जो मालिक है उसको रोज लात मार रहा है ना, उसको गालियां बक रहा है। हम्म, आप समझ रहे हो, वो कोई नहीं समझता है, वो नहीं देखते ना अपन लोग, अपन क्या रिजर्वेशन के एक मिनिस्कूल अमाउंट ऑफ जॉब्स और वर्क ऑक्यूपेशन को देखते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं, और जो 90% ऑफ प्राइवेट नौकरियां हैं उसका क्या, जहां पे उस इंसान को रोज कूड़ा फील कराया जा रहा है ना, उसको नहीं, एंड इंफीरियर फील कराया अगर जा रहा अगर वो नहीं भी करे ना, व्हाट हैपेंस इज, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आल्सो इज के people around you tell you not to stretch too much, है। like ज्यादा नहीं बोलो। आई थिंक आई एम श्योर मनल को भी कोई कोई रिलेटिव या फैमिली में बोला होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं, लाइक डोंट डोंट, बिकॉज एक वो डर, एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फियर कि हम्म, we should not over succeed also, just succeed हम्म enough so that you're not visible. ओ, ये बहुत हाँ सही वो पॉइंट है भी तो भाई, है, ये तभी तो वो हम्म, न्यूज ये आती बहुत रहती है ना खतरनाक कि पॉइंट है। घोड़ी पे कैसे चढ़ गए, मतलब वो जो एक हाँ उस प्रकार की जो न्यूज आती है, हाँ, succeed only कोई enough. कि भाई दूसरों की आंख में आ गए तो फिर वो I can जेलसी I से। can guarantee I can guarantee you today, the day any of the people here, right, were Dalit, if they break through, do huge things in their work, even their own families will come and tell them, this is enough. Like हम्म don't do more. Matlab, just this is good. Stay here. या ऑल्सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, सुमित सेइंग दिस, मुझे याद है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ड्रम ये भी है कि अगर आप ओवर अचीव कर रहे हो, है ना, तो आप ना कोई पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, इसलिए आप ओवर अचीव कर रहे हो, और अगर आप अंडर अचीव कर रहे हो तो तुम तो दले, तो तुम तो वैसे ही बेवकूफ हो, तुम्हें तो आते नहीं है कुछ। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? तो ये है दिक्कत। अब आप सोचो सोचो, अ पर्सन हु इज वर्किंग, लेट्स से इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, इफ दे वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, राइट, एंड पीपल नो दैट यू कम फ्रॉम सम सर्टेन बैकग्राउंड एंड यू ओवर परफॉर्म, इट वर्क्स अगेंस्ट यू, बिकॉज भाई ऐसा क्या हो गया, I क्या पॉइंट प्रूव करना है तेरे को, I actually want चिल to कर ले यार, यू add नो। a thing here, which is basically, I think whatever the shit sandwich we're discussing, I think women have आई 10,000 times the shit sandwich. So आई एम श्योर, it's या very या interesting. हम बार बार समझा रहे हैं, आप ख्याति समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ख्याति लोग कैसे ट्रू तो मुझे लग रहा है ट्रू ट्रू कि ट्रू, हम आई लोग जो एग्री, डिस्क्राइब कर द रहे हैं, लाइक आयरनी। एज वुमन, हाँ, द हाँ आयरनी। तो जैसे बहुत सारी औरतों ने मुझे भी शेयर किया, जब ऐसे हम बात करते हैं तो बहुत सारी औरतों को ये फीडबैक मिलता है, एक तरफ से उनको फीडबैक मिलता है तुम बहुत अग्रेसिव हो, क्योंकि अगर हम असर्टिव हाँ बने तो वो लोगों को अग्रेसिव लगता है, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना ऐसे बोलने वाली महिला, मतलब ये ज्यादा बोलती है, ठीक है, ये भी ख्याति पसंद बहुत नहीं। एग्रेसिव हो रहा है यार। और अगर तुम ना बोलो तो वो तो समझ ही लेते ना, तुम तो गवा मतलब गाय हो, तुम तो बोलोगी ही, तुम्हें तो हाँ बोलना ही नहीं आता, तो तुम नहीं बोलोगी, तो तुम यू आर नॉट असर्टिव इनफ, एंड अगर तुम बोलोगी तो देन यू आर टू अग्रेसिव, तो ये होता है। ट्रू। एंड कमिंग टू बैक टू द दलित पॉइंट इज, मेरे को ना आजकल एक जो मैंने खुद से, आई थिंक हर कोई अपना फाइंड्स देयर वे टू देयर आइडेंटिटी व्हेन बीइंग अ दलित। आई थिंक I want to hear what how Shikhant thinks about his, and how Manal thinks about his. Mera, how I found like my way to my Dalit identity is that ke basically one is that we are one beyond cultures. Like Dalit is Dalit. It doesn't matter. You're Mallu, you're Bengali, you're this, you're Sikh, you're Musalman, whatever. Like Dalit is Dalit. So I very solid way say I believe in that solidarity, right? Dalit solidarity beyond states. And second thing is what so that's something I'm really enjoying nowadays. For example, like I loved it when Manal, as soon as he heard the Dalit, oh, there's a, this thing is it's very satisfying to meet each other, because another thing with Dalits is that there's a thing called closeted Dalit, right? Where we don't, lot of Dalits don't go out and say they're Dalit because डर होता है of the social cost जो भरना पड़ेगा उसका, राइट, क्योंकि लोग करेंगे बिहेवियर. बट उसके अलावा one other thing I absolutely love
and which is my way to being Dalit, is which also really chimes with my other identities of being a cartoonist, is that as Dalit, I will always stand with the minority. I will always stand with the person with lesser number of people. I'll be on that side. And that is what uh, is just, it's, I don't know what you can call it. It's a religion, it's an identity, it's whatever. But in my book, I think this is how I see my identity, and uh, it's just exploding. Like no other leader of independent India has become a god to their people. And right, why shouldn't he be, right? Because what do you ask God for? Khana do, safety do, ye do. He literally brought families, our families, individually out of poverty. Like if there was a God, I would take this God any day who gives my family a job, brings me out of poverty, puts food on my table, and creates a place from where I can become a cartoonist. Yeah. Chale, any closing remarks before we end this podcast? Khyati, do you want to? I would say thank you for inviting me for this discussion. Again. नहीं मतलब मैं genuinely बता रही हूँ. I think बहुत ये मैंने शिखांत को भी बीच में बताया था एक बार कि ये मैंने बहुत टाइम से ये कास्ट वाले टॉपिक पे मेरे आसपास वाले लोगों से भी बात नहीं की है, क्योंकि और अगर करती भी है तो इट इज मोर फ्रॉम एन एंगल ऑफ अपर कास्ट पीपल स्पीकिंग समथिंग, राइट, फ्रॉम दैट इज वन इको चेम्बर जो आसपास कभी कभी मिल जाता है तो कभी वहाँ बात होती है. पर काफी बार मतलब मैंने इतनी ओपनली और दलित लोगों से इस प्रकार की बात मतलब इस चीज के इतनी ओपनली कंफर्टेबली बात नहीं की है. तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन. माय टंग इज जस्ट एनीवे, सो या थैंक यू फॉर दैट. You're welcome, Manaal. Thank you for inviting me, and I hope to collaborate with you guys again, sometime, like in whatever way possible. Sumit is ready with his invite, all. don't worry. Whenever he puts together the next project with musicians, artists, designers, dancers, there's 10 more people, and then one cartoonist एक कोने में. वो सुमित कार्टूनिस्ट से टैटू आर्टिस्ट, मंडाला आर्ट, और वो एडल्ट कलरिंग बुक के बाद आता है. ओ पता है और किससे नीचे आएगा? एडल्ट कलरिंग बुक भी छोड़ दे. देयर इज दिस पर्सन आई एब्सोल्युटली लोथ, ये ना रेत के वो बनाता है, सैंड स्कल्पचर्स, राइट? आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम. और ना आई दैट्स लाइक द आई थिंक इट देयर इज एन and it irritates me every day because his takes are basic. Like so world health day पे लिखा होगा वर्ल्ड हेल्थ डे और 2 इंजेक्शन बने हुए, बस ये. So the only thing is वो उसको रेत में बना रहा है, makes him like everybody flips over it. Yeah, and I think cartoonist उससे भी नीचे है उस रंग में. यार गलत गेम खेल यार. मेरे को भी ऐसा प्लूटोनियम से कुछ बनाना चाहिए था, तो ऐसा कुछ ऐसा सही में रैंडम. बट या ये सब सुमित की गलती है, उसकी वजह से हम सबको भी एक कॉमिक का चस्का चढ़ गया है बनाने का. गलत लाइन में आ गए. नशे. सुमित ऐसे आता है, ऐसे पेपर में, ऐसे पेपर को रोल करके ना उस पे कॉमिक्स लिखी होती है, वो ऐसे पकड़ा देता है, ये मांगता है क्या, फिर ऐसे तुम ऐसे पढ़ लेते हो उसको, लाइक कौन से फिर तुम ऐसे पढ़ लेते हो एडिक्टेड. अरे ये HB पेंसिल छोड़ लड़के, ये 4B पेंसिल देख. लास्ट टाइम रबड़ कब चलाया था? वो है ये गेम सुमित But का. But हाँ, very good discussion. I think it was very interesting to know all of you guys thoughts and opinions. And ending में वही है कि मतलब जैसा अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि we should have these kind of things more often, and it's always good to get vivid point of views ना, क्योंकि again वही रहता है ना
जितना ज्यादा बात करेंगे उतना बढ़िया ही है. सो या, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी. और बनाते हैं भाई बढ़िया काम वाम. यही है जिंदगी का उसूल. Yeah, and I to just want to say कि मतलब to everybody really कि just especially when it comes to caste, obviously there are not a lot of people who publicly go out and say they're Dalit. It's still true. I would to say कि please, if you're Dalit, just go out into the world and scream it to the skies and own it, because in my opinion, it's one of the most progressive identities to have, that you've seen your history has so much bad things that have happened and you're still looking out for the smaller guy. So it's a great identity to have. And yeah, matlab I to wahi hai my I just hope we cut that bit from past podcast where Shikhant ruined my life, but uh, What I did I do, think Sumit? I just तो मनल I'm sorry हम went तुमको out and shouted in the बोर sky. करते जा रहे. हमारे जोक उन्हें नहीं So I समझ just मतलब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या जोक चल रहा है अभी. नहीं I was referring to last time क्या हुआ था, and I'll say कि वो मनल के लिए कि so मनल Manal. basically way back basically मेरे फैमिली में वो पूजा वूजा ये सब करते थे. मेरे फादर हवन करते थे जब भी कुछ नया शुरू होता था घर में, एंड मैं अपना स्वीट चीक पिंक बॉय की तरह मैं खड़ा होकर आराम से अपना लॉलीपॉप खा रहा था, और ये शिखांत के साथ बात कर रहा था, ना टेलिंग हिम कि हाँ फिर मैं उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा, और फिर इसने मुझे बोला कि क्या जरूरत है मंदिर जाने की, उस उस धर्म में क्यों जाना जिसने 3,000 साल में घटिया का. एंड आज लाइक मेरा बल्ब चमका, मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है. एंड वर्स्ट इज के इट रूइंड मी. आई वेंट बैक, आई टोल्ड इट टू माय फादर, मेरे बाप का मंदिर जाना बंद, मेरे घर में हवन होने बंद, मेरे घर पहले ही आधा नास्तिक तो वैसे ही था, ये करके तो आज की डेट में शिखांत ruined me. I was the progressive, I was the Dalit Progressive BJP Hindu. wants. I was the I was the I was the Dalit BJP wants, and he ruined me. Yeah. Uh, इसका एक मीम बना चाहिए ना, द दलित बीजेपी वांट्स, द दलित बीजेपी गेट्स, ऐसा करके. next comic में. I think next comic I'll do is, I think, sorry for speaking of more and more, but there's one we should do called Dalit Park, where basically casteism khatam ho gaya, but this one scientist brings it back in this one park. वो एक मच्छर मिलता है उनको जिसने दलित का खून जिसने दलित का खून पिया होता है, and it's like caste finds a way. Sorry. Guys, any recommendations that you'd tell us and to the audience कि ये पढ़ो. In graphic novels, please go read. There is this graphic novel about Jyotiba Phule, caste, called Gardener in the Wasteland. So yeah, best read. Go, you can buy it today on Amazon. Yeah, beautiful book, Gardener in the Wasteland. nice. And obviously all the Bakarmax comics on caste anyways are a gem. Yes. And दलित whenever और कौन सी भीमायना हाँ मुझे मेरे किसी कजिन ने ही ऐसे गिफ्ट की. ये स्कूल में पढ़ते थे हम. I remember reading this in school. हाँ, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की क्योंकि मैं कॉमिक बनाती हूँ और मैं ऐसे ही बातें करती रहती हूँ, तो उनको लगा कि ये पढ़ना चाहिए. अरे पर ये पढ़ के देखी क्या आपने? सच बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ी है अभी तक, पढ़ूंगी. हाँ क्योंकि बहुत बोरिंग है. And all the performances of Blue Project. मैंने वो पढ़ी है, गार्डनर इन द वेस्टलैंड पढ़ी है, तो ये वाली मैंने अभी पढ़ी नहीं है. बहुत बोरिंग है. हाँ, एक तो ये भी बड़ी दिक्कत है भाई, ये ग्राफिक नॉवल जो बनाते हैं ना, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ इंटेलिजेंट चीज बोलने तो भाई बोरिंग ही हो सकती है, मजेदार तो हो ही नहीं सकती. एक तो ये पता नहीं एक सेकेंड, सबसे ज्यादा अवार्ड सबसे बोरिंग लोग जीतते हैं.
True. Sorry, I take back my words. Okay, I'll be bored till tomorrow. Last time, I think this is the only time a comedy has won Best Picture at Oscars. This year, after all the existence of Oscars, Yeah. comedy never win award. मतलब अब थोड़ा change हो रहा है tide. सही है. Anyway, I have yes. 3 recommendations. One is, I mean, not just pertaining to Dalit stories, but also थोड़ा associated belief systems. तो एक तो है, एक बड़ी अच्छी किताब है शॉर्ट स्टोरीज की, द आदिवासी विल नॉट डांस, जो कि काफी किसकी किताब? Yeah. द आदिवासी विल नॉट डांस करके शॉर्ट स्टोरीज की किताब है. अच्छा. तो वो बड़ी अच्छी है, मतलब आई थिंक आई वुड रिकमेंड. हाँ, दिस Oh, हाँ. तो ये बहुत वाह. बढ़िया है. दूसरी है लाल सिंह दिल करके एक ना पोएट हुआ करता था, तो उसकी पोएम्स बड़ी मस्त हैं. तीसरा है बंत सिंह करके एक पंजाब का दलित सिंगर है, म्यूजिशियन है. तो उस आने वाने बढ़िया प्रोटेस्ट म्यूजिक है. तो ये 3 चीजें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा टू द लिसनर्स. मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, जो शायद बोरिंग लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगती है. माइकल सैंडल करके एक प्रोफेसर है फिलोसॉफी के, हार्वर्ड में वो पढ़ाते हैं, और उनका जो पूरा फिलोसॉफी कोर्स है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो कोई भी माइकल सैंडल सर्च करेगा तो उनका कोर्स दिख जाएगा. एक तो बहुत ही बेहतरीन टीचर है. तो आई थिंक एक टीचिंग एक्सपीरियंस कितना इंटरैक्टिव हो सकता है उसके एग्जाम्पल पल के लिए भी है. और ये बहुत सारे उनके काफी सारे इसमें इस पर भी बहुत सारे डिस्कशन होता है कि थियोरी ऑफ जस्टिस के बारे में, कि उसके आसपास के बहुत सारे एंगल्स के बारे में, मेरिट क्या होता है, वो मेरिट के बारे में भी बहुत समझाते हैं. तो आई थिंक हमारे यहाँ पे मेरिट वगैरह को हम इतना अच्छे से समझते नहीं है. मेरिट, प्रिविलेज, ये सारे वर्ड्स को इतना ठीक बहुत कम लोग समझते हैं. जो एक ग्रुप ऑफ पीपल समझते हैं, उसके बाहर पता नहीं है. तो आई थिंक ये मुझे लगता है और लोगों को उनका वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से, और ये सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में नहीं बताते हैं, वो तो पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बताते हैं. बट वो एक फ्रेमवर्क है जिससे हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या जहाँ पे भी इस प्रकार की ऊंच नीच वगैरह हुई है, तो उसके बारे में कैसे सोचे और क्या अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं. तो वो एक अच्छा वो एक बिंज वर्दी लेक्चर्स हैं. तो क्या सुनना नाम है चाहिए. उसका? माइकल सैंडल, Michael Sandel. Oh, so all the SANDEL. हाँ, I links will. will compile, I think. हाँ. No, we'll compile also. Yeah. हाँ, it can be the description I think of the Yeah, I will podcast. send you the link. तो उसमें उन्होंने सही. मेरिट वगैरह भी बहुत डिटेल में इस पे समझाया है. काफी अच्छा है. मनाल? I'm not much of a reader, so I don't know what books to recommend, but I would like to give a shout out to Manjeet Sarkar and Mayur Kamble. They're also two Dalit comics who are doing their Awesome. solos and they're touring the country and stuff. So just Google, Instagram them, Mayur Kamble and Manjeet Yeah. Sarkar, and I'm there. Blue Material. It's amalgamation of Nice. everybody else. And that was it. Thank you all for joining us. Shout out to Khyati, Shikhant, and Manaal for joining us on this podcast. This Eid ka Chand will be back soon with another episode. Until then, comics पढ़ते रहिए, and for business, reach out to us at whothis@bakarmax.com. एक क्यूट सा स्टोर भी है जहां यू कैन बाय बकरमैक्स मर्चेंडाइज. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.